Hello and welcome to Classic Tutorial. Dear viewers, I wish you a warm Happy New Year 2021. Actually, this day happens to be 1st January of 2021 and this video lecture will be my New Year message to you all. So, in this video, I will cover stanza 3, 4, 5 and 6 of the poem A Psalm of Life written by H.W.Longfellow. Dear viewers, if you have not watched part 1 of this video, then please go and do it watch so that you will get connection with the part 2. And as you know, each stanza of this poem are interconnected and each stanza of this poem is connected or linked with the succeeding stanza. So, without wasting our time, let's get started. Look, our stanza 3, it reads, "Not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way, but to act that is tomorrow finds us better than today." That means, in this stanza, our poet, he wants to say or he talks about destiny and he says, what is the goal of life? Okay, let's understand. Look, not enjoyment and not sorrow is our destiny and our way. Let me understand what is destiny. Destined means it is predetermined, जो पूर्व लिखित पूर्व निर्धारित आम जो भाग्य जो आम विश्वास करूँ भगवान आम भाग्य को निर्धारित करिछंती पूर्वरु सही कथा को कहा जाइछि डेस्टिनी माने ता माने देखो आम लाइन 2 रु हम बुझिबा भलरे बुझी परिबा ई जब डेस्टिनी एंड और वे ता माने आम जो पूर्व लिखित भाग्यर शेष रे कि रास्ता रे जीवन रो भाग्य रे रो रास्ता रे वा शेष रे कि खाली नॉट एंजॉय खाली एंजॉयमेंट नाही कि खाली शोरो नहीं से कहउछंती कि आवर डेस्टिनी इज नॉट ओनली फील विथ एंजॉयमेंट एंड नॉट ओनली फील विथ सोरो कि खाली शोरो कि खाली एंजॉयमेंट रे आम डेस्टिनी भरपूर होय नाही किंतु बरम इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ तापर पुनी आउ आमे शेक्सपियर भी कहती हमको कौन कैरेक्टर इज डेस्टिनी Character is destiny mal kono it is the individual or human being, it is the work or the deed of human being or individual which determines his future, which determine his luck, तार future तार luck design की परी हो मनुष्यर जो निजर कार्य रु से तार future को से लेखि पारिबो सेटा कहा जाउची character is destiny बोल विलियम शेक्सपियर कहिथिले तापर पुनी देखो but to act that is tomorrow finds us farther than today. But to act means look कि आम जो स्टांजा 2 को टिक जीवा स्टांजा 2 रे कहिथिले कि जो स्पीकर ऑफ दिस पोएम से कोन कहउथिले कि द ग्रेव इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ कि जो शमशान को जीवाटा आम लाइफ रो अल्टीमेट गोल नहीं बोल से कहिथिले अंतिम लक्ष्य नुहे बोल कहिथिले आ एठी कहउछंती कोन से लक्ष्य हेबार कथा बट टू एक्ट दैट मीन्स मेटाफोरिकली से एक्ट माने कोन कहउछंती एक्ट माने एटा वर्क एटा मेटाफोर यूज करिसंती से बट द गोल ऑफ द लाइफ इज टू एक्ट ता माने कार्य करिबाटा आ एपरि कार्य करिबा कि आमे एपरि कार्य करिबा आज टुडे रे आज एपरि कार्य करिबा सो दैट हमर जो फ्यूचरटा हमर जो टुमोरो हमको गोटे बेटर स्किल्ड बेटर मैनर्ड ओके और मोर परफेक्ट मैन हिसाब रे पाइबो दैट माने आमर फ्यूचर रे आमे प्रेजेंट रे एपरि कार्य करिबा कि फ्यूचर रे आमको आमे निजे जो टुमोरोटा आम फ्यूचरटा आमको गोटे कदम आग को गोटे स्टेप फॉरवर्ड ही देखिबो पछरे देखिबो नाही बोल कहा जाउची सी आमे डिफरेंट पेशा रे थाउ डिफरेंट प्रोफेशन रे थाउ आ से प्रोफेशन रे आमे किपरि आमे परफेक्शन आनी पारबो हाउ कैन वी ब्रिंग परफेक्शन इन आवर ओके इन आवर डिफरेंट प्रोफेशन आमर प्रोफेशन किपरि आमे सेटा आनी पारिबा परफेक्शन सही कथा कहा जाइछि तापरे लेट मी जंप टू स्टांजा 4 आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग art is long and time is fleeting
and our heart, though stout and brave, still like muffled drum beating in the funeral marches to the grave. In this stanza, the poet compares that art with the time, and he talks about heart, and he compares heart with that muffled drum which is beaten during the funeral marches. So let's understand. The art is long. देखो art के we can interpret this art in differently. किपरि देखो गोटे तो कहा जाउची आर्ट माने होची लर्निंग की नॉलेज, शिक्षण बा जो ज्ञान बा शिक्षण एटा लॉन्ग, एटा दीर्घस्थायी. ओके, इट स्टेज फॉर लॉन्ग, एटा बहुत लंबा टाइम तक रहे बोल कहा जाइछि आर्ट को, जो आम जो लर्निंग बा नॉलेज को. तापर आउ गोटे कथा कहा जाउछि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, माने आम जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रे, ओके, ये जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रे we have been assigned with so many works, so many commitments, so many duties to be fulfilled. आम करिवार अछि ए कम समय रे. टाइम इज फ्लीटिंग माने समय क्षणस्थायी, इट पासेस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी एटा अतिक्रम हो जाए. से कम समय रे हम बहुत किछि कार्य करिवार अछि बोली. और जो वॉइस ऑफ द पोएट, वॉइस ऑफ द पोएम, ए पोएम रो जो स्पीकर कहउछंती. तापर आउ गोटे हिसाब रे भी आमे एटा को इंटरप्रेट करि परिबा आर्ट को. आर्ट माने देखो, आर्ट माने एनी कैन फुटप्रिंट, किछि फुटप्रिंट, कला और कीर्ति. आमे कीर्ति बोल भाबिबा एठने. कीर्ति माने देखो आर्ट इज लॉन्ग, माने हमर जो कीर्तिटा आमे जा छाड़ू से कीर्तिटा एटा लॉन्ग. ता माने लेट मी साइट एन एग्जांपल हियर. The Taj Mahal was built during the 17th century and it is 21st century. That means it has been around 300 years. Still we remember the Taj Mahal. Still people from across the globe, okay, come to see the beauty of this Taj Mahal. But the person who built it, he is no longer with us. Still his architecture, still his footprint is remembered by millions. तो सेटा कह जाउछि एंड टाइम इज फ्लीटिंग. दिस टाइम इट पासेस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी अतिक्रम, बहुत जल्दी एटा अतिक्रम करि चले. तापर आउ गोटे मु एटा एठी आउ गोटे मु एग्जांपल देबा को चाहे. लेट अस कंसीडर द पोएम इटसेल्फ. ए पोएम, द पोएम वाज written in October 1838 and it is 2021. That means look, it has been so long, still we read this poem and gets inspiration from it. Okay, and we remember that man, that Henry Wordsworth Longfellow. Because of whom? Because of what? Because of this footprint, because of this message, what he has left with him, behind him. Oh, ये जो टाइम इज फ्लीटिंग, ये टाइम इज फ्लीटिंग मान देखो our human history we have witnessed, okay, we have witnessed 2021 or around 2000 year of AD and several thousands years of BC. तो एते जो समय रे, एते जो हजार वर्ष हम देखि सारिछु, से हजार वर्ष रे ए जो 60 की 70 ईयर पाई we have been sent to this world for only for this to this earth for only 60 to 70 years. और 60 70 सेठी कोन लुचि जाउछि, बहुत कम समय सेटा बहुत जदी पास हो जाउछि से हिसाब से कहा जाउछि. तापर पुनी कहउछंती एंड आवर हार्ट दो स्टाउट एंड ब्रेव. आ आम जो हृदय जदिओ स्टाउट अछि, स्टाउट माने कोन स्ट्रांग, मजबूत, दृढ़काय, ओके, प्रफुल्ल, मोटा, ए प्रकार आम हार्ट जदि गोटा स्टाउट अच्छी आउ ब्रेव अच्छी, साहसी अच्छी. दैट मीन्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्टाउट एंड ब्रेव. स्टिल तथापि कौन होची लाइक मफल ड्रम बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस इन द ग्रेव. ता माने कौन आम हार्ट आमे ब्रेव आउ स्टाउट थिबा सत्वे भी इटा जो मफल ड्रम परा. व्हाट इज मफल ड्रम? लेट मी एक्सप्लेन यू. मफल ड्रम मीन्स it is a kind of drum which is covered with a wet cloth in order to reduce the sound, minimize the sound, in order to deaden the sound, in order to make the sound more solemn and sad. तो देखो this drum is beaten during the
funeral marches जिते बेले आमे गोटे डेड बॉडी को आमे शमशान मशाणी को नौ से मशाणी को गला बेले जो ड्रमटा बजा जाई थाए सेटा को मफल ड्रम बोल कहा जाए व्हाई तो देखो ये मफल ड्रम माने एठी जे कि मफल ड्रम जदि आम डिस्टेंस रे बाजुची कि each beat of this drum the dead body moves a step forward to the grave तो जेते जेते थोड़ा में मफल ड्रम को बजा जाए से डेड बॉडीटा ओके से डेड बॉडीटा से शमशान रो से तार ग्रेव को पूरा गोटे स्टेप आग को जाए सेटा कहा जाए आमर जो हार्टबीटा इच बीट ऑफ आवर हार्ट ओके फ्रॉम इच बीट ऑफ आवर हार्ट वी नियर टू डेथ वी गेट क्लोजर टू डेथ लाइक दैट जेपरी मफल ड्रम इच बीट रे गोटे स्टेप फॉरवर्ड को जो तार जो ग्रेव को तो लाइक दैट आमर जो हार्टबीट होचे एवरी हार्टबीट रे आमे जो आमर जो डेथ रो डेथ आड़े गोटे स्टेप आग को जाऊँ लाइक दैट से कहा जाए बाकी वी शुड नॉट फियर द डेथ द मेसेज ऑफ दिस स्टांजा इज दैट वी शुड नॉट फियर द डेथ वी शुड नॉट ओके एक्सप्लॉइट okay spoil our present okay remembering the date rather we should use the fullest of the date the fullest of the present now let us understand stanza 5 of the poem stanza 5 reads in the world's broad field of battle in the bivouac of life be not like a drum driven cattle be a hero in the strife in this stanza our poet he compares world with the battlefield and he urges us not to be the drum driven cattle but to be a hero in the strife so let's understand in the world's broad field of battle look William Shakespeare also says world is a stage and we are merely an actor and actresses like that Longfellow he also compares वर्ल्ड विथ द बैटल फील्ड तामाने से गोटे मेटाफर यूज करूछंती एठी वर्ल्ड को गोटे बैटल फील्ड सहित से तुलना करूछंती एंड इन द बिवोक ऑफ लाइफ बिवोक मीन्स इट इज ए फ्रेंच टर्म मीन्स ए टेम्पोरारी कैम्प यूज बाय सोल्जर्स जो सोल्जर माने टेम्पोरारी कैम्प रे रही थांती एंड व्हिच इज नॉट सिक्योर व्हिच इज नॉट प्रोटेक्टेड जार निरापदा न थाए कि whenever and from wherever their enemy may attack se manku tanko satru attack kari paranti like that our human life also like that battlefield and we are in that camp ki ei jo human life re anytime from anywhere problems obstacle may come to us but we have to fight as we are in the battlefield okay tapar puni कहउछंती be not like drum driven cattle drum mane a person or any creature who cannot speak who cannot raise his voice against other तापर कहउछंती be not like drum driven cattle माने होची पशु माने ओके गाय गरु बा पशु जो गाय गरु बा पशु से माने they go wherever they are instructed to go wherever they are pulled wherever they are okay drawn they go there without any aimlessly purposelessly बिना किसी उद्देश्य रे ओके बिना किसी लक्ष्य रे तांकर जो हडर जो पशुपालक जो आड़े तांको इंस्ट्रक्ट करती जो आड़े तांको टाणी नहीं जानती से आड़े जाई थांती बट वी हैव टू नॉट बी लाइक दैट आमे से प्रकार ड्रम ड्रिवन कैटल परा हेबाकू नहीं आमे बरम बी हीरो इन द स्ट्राइप the speaker or the poet he urges us be hero in the stripe माने होचे संघर्ष हमर जो जीवन संघर्ष रे जीवन यात्रा गोटे संघर्ष आमे गोटे संघर्ष रे छु ए जीवन यात्रा रे हम गोटे हीरो हेबाकू पड़िबो वीर हेबाकू पड़िबो व्हाट डज हीरो सिग्निफाई हीरो मीन्स ए पर्सन हु नेवर सरेंडर्स he may be defeated से ध्वंस हो जाई पारे से हारी जाई पारे बाकी से केबे सरेंडर करे नहीं okay so like that you have to fight in that battle okay next stanza 6 reads trust no future however pleasant let the dead part bury its dead live act in the living present heart within and God overhead in this stanza
the speaker, he prefers or prioritizes present over past and future, and he says, okay, to do work in the living present, having faith in the God. Okay, so let's understand. Trust no future, however pleasant. कि प्रेजेंट डोंट ट्रस्ट फ्यूचर फ्यूचर को तुम्हें विश्वास करो नहीं, हाउएवर प्लेजेंट इट मे बी, एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है, सो दैट टुमारो मे कम बट वी मे नॉट बी देयर. तो लाइक दैट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. टुमारो को एटा ग्रहणीय बोले मानी नियो नहीं. we don't know tomorrow or our future which is unborn. ए पर्यंत सेटा आम पाखकु आसी नहीं. So we should not believe that. And let the dead past bury its dead. तापर जो आम जो past which is dead, which is no longer with us, तो let it be buried. कि एटा आमे तमे bury करी दियो, एटा cover करी दियो, शमशान रे ता दफने दियो, जाली दियो, like that कहउछंती. फॉर एग्जांपल गोटे डेड बॉडी को आमे कोन पई जाली दे थाउ बा कवर करी दे थाउ बा दफने था कोन पई, इन ऑर्डर टू forget the memory of that dead body. Like that our past which may be bitter experience for some, कापाई गोटे bitter experience भी है थाई पारे सेटा. Someone's heart might have broken in love, someone might have lost his parents, someone might have lost his brother sister, कि को माता पिता तारो young छुआ को हराई थिबे. So that we should not remember that thing. We should not lament in past. Past रे आमे झुरीबा कथा नाही, बिलाप करिबा त कथा नाही. We should not be in lamentation of the past. Past lamentation रहिबा कथा नाही. Rather से कहउछंती act in the living present. Look, he deviates the language and repeats the word act. तार माने in order to emphasize that से act माने होचे कार्य करि चालो, कार्य करि चालो बोल से दुई थर रिपीट करिसंती. In the living present means the present which is in front of you, where you are living, because in the present you have that some position, you are in some position, your age support, your body support to do work, to labor hard. Who knows, in future your body may support or not, your age may support or not, and you are in a position, that position would be with you or not, we don't know. Because of that, do whatever you like in the whatever you want in the future. That means use the fullest of the present. And he says heart within and God overman. That means dedicatedly pura monor sahito lagan sahito karya karo, and God overhead. That means we trust that trust in God, that God's blessing is over our head. भगवान रो जो आशीर्वाद आम ऊपर अच्छी, and Almighty He looks everything above us, staying above us. तो ई प्रकार आमे कार्य करी चलीबा बोली जो speaker of this poem or that poet, he urges us. I think today's video has been a little lengthy. Once again, I wish you a warm happy new year 2021, a year loaded with full of happiness, inspiration and encouragement. And let us take resolution to bring perfection in our work. Thank you very much.